morning students, welcome back to our EVS class. I hope you all are doing good. So let us start our class. In the previous class, we learned about the different ways of communication. So what are the different ways of communication? Post and telegraph, telephones, mobile phones and fax are some ways of communication. Today we are going to learn about mass communication and technologies used for mass communication. How can we communicate with many people at the same time? There are different ways to pass on an information to a large number of people. When an information or idea is communicated to many people at the same time, it is known as mass communication. जब कोई इंफॉर्मेशन या आइडिया एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मास कम्युनिकेशन. सो व्हाट इज अ मास कम्युनिकेशन? When an information or idea is communicated to many people at the same time, it is known as mass communication. For example, newspapers and magazines, radio, television and internet spread an information to many people at the same time. So these are called mass media. Newspapers and magazines, radio, television and internet ये क्या करते हैं? एक साथ किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मास मीडिया. Today we know a lot about what is happening around the world because of these mass media. So let us see the different technologies used for mass communication. First is newspapers and magazines. Second is radio. Third is television. Fourth is internet. And last is satellite. Okay. So let's start with newspapers and magazines. Newspapers and magazines are give us news and information from all over the वर्ल्ड. न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हमें पूरी वर्ल्ड की न्यूज़ और इंफॉर्मेशन देते हैं. न्यूज़पेपर्स कैरी अ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स अबाउट डे टू डे हैपनिंग इन द सिटी, कंट्री एंड द वर्ल्ड. और न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जो आजकल हमारी कंट्रीज में हो रहा, कंट्री में हो रहा है, सिटी में हो रहा या फिर जो भी वर्ल्ड में हो रहा है, सारी इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर्स के थ्रू मिल जाती है. न्यूज़पेपर्स आर यूजुअली पब्लिश्ड एवरी डे और न्यूज़पेपर डेली पब्लिश्ड होते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट इज मैगजीन्स. मैगजीन्स आर प्रिंटेड इन अ बुक फॉर्म. मैगजीन्स क्या होती है? एक बुक फॉर्म में प्रिंटेड होती है. आपने देखा होगा डिफरेंट मैगजीन्स होती हैं जो बुक के फॉर्म में हमें दिखाई देती हैं. A magazine has a special reports, stories, jokes and a variety of articles with a lot of colorful pictures. मैगजीन्स में क्या होता है? बहुत रिपोर्ट्स होती हैं, स्टोरी होती है, जोक्स होते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं और बहुत सारे कलरफुल पिक्चर्स भी होते हैं. ओके. मैगजीन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड वीकली और मंथली. और मैगजीन्स क्या होता है? वीकली और मंथली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज रेडियो. एन इटालियन साइंटिस्ट Guglielmo Marconi invented the radio. Who invented the radio? An Italian scientist Guglielmo Marconi invented the radio. It is a very useful means of mass communication. ये mass communication का एक बहुत useful means होता है. Okay. Radio stations broadcast programs on news, music, sports, science, agriculture and on many other interesting subjects. रेडियो स्टेशन क्या करते हैं? बहुत सारे प्रोग्राम्स को
ब्रॉडकास्ट करते हैं, न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करते हैं, म्यूजिक व स्पोर्ट्स, साइंस और एग्रीकल्चर और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स से रिलेटेड प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉडकास्ट? Broadcast means to send out sounds or images or both sounds or images by by radio or television. Okay, so radio is especially useful for people living in remote villages who have little or no access to information. और रेडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है जो रिमोट विलेजेस में रहते हैं. रिमोट विलेजेस, रिमोट मीन्स टू लोकेटेड फार अवे प्लेसेस, मीन्स रिमोट विलेजेस जो विलेजेस बहुत फार अवे होते हैं, उन विलेजेस को हम कहते हैं रिमोट विलेजेस, जहाँ पे इंफॉर्मेशन थोड़ी या बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती है. उन लोगों के लिए भी रेडियो एक यूजफुल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है. Okay, it is also good for people who cannot read. और ये उन लोगों के लिए भी यूजफुल है जो रीड नहीं कर सकते, जो पढ़ नहीं सकते. So they can listen to the program. इसलिए वो क्या करते हैं, प्रोग्राम को सुन सकते हैं. Okay, now next is television. We all know about the televisions. It is a very popular with all ages of people. टेलीविजन क्या है, सारी एज के लोगों में बहुत पॉपुलर है. ओके, वी वॉच द न्यूज, मूवीज, सीरियल्स, स्पोर्ट्स एंड मैनी अदर प्रोग्राम्स ऑन द टेलीविजन. हम टेलीविजन पे क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, न्यूज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं और स्पोर्ट्स भी देखते हैं. ओके, वी सी द थिंग्स एज दे हैपन इन फार ऑफ प्लेसेस on the other side of the world. हम और ऐसी बहुत सारी चीजें देखते हैं जो फार ऑफ प्लेसेस पर हो रही होती हैं, वर्ल्ड के अदर साइड पर हो रही होती हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेट. द इंटरनेट इज अ फास्ट एंड इफिशिएंट वे ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड. इंटरनेट क्या है, बहुत फास्ट और इफिशिएंट वे की किसी भी इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड में सेंड करने का. ओके, सो इट हेल्प अस टू कनेक्ट टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंटरनेट क्या करता है, हमें वर्ल्ड के सारे लोगों से कनेक्ट करने का वर्क करता है. इट इज अ नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट सेंड्स इंफॉर्मेशंस एंड पिक्चर्स थ्रू सैटेलाइट. ये क्या होता है, इंटरनेट एक कनेक्टेड कंप्यूटर का नेटवर्क होता है जो किसी भी इंफॉर्मेशंस या पिक्चर्स को सैटेलाइट के थ्रू सेंड करते हैं. ओके, दिस नेटवर्क इज कनेक्टेड बाय टेलीफोन लाइंस और केबल्स. और ये जो नेटवर्क होता है ये टेलीफोन लाइंस और केबल्स के थ्रू कनेक्ट होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सैटेलाइट्स. We already learned about satellites in our previous chapters. Okay, so there are two types of satellite: natural satellite and artificial satellite. Okay, so communication satellites are artificial satellites. Artificial means man-made satellites that orbit around the Earth. Okay, the communication satellites are used for sending radio and television signals around the world. कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का यूज वर्ल्ड में रेडियो और टेलीविजन के सिग्नल्स को सेंड करने के लिए किया जाता है. These satellites are sent into outer space by rockets. और ये जो सैटेलाइट होती है इन्हें आउटर स्पेस में रॉकेट के थ्रू सेंड किया जाता है. They carry computers, cameras and other equipments. और इनमें क्या होता है, कंप्यूटर होता है, कैमरा होता है और बहुत सारे ऐसे टूल्स लगे हुए होते हैं जो इनके वर्क में हेल्प करते हैं. इंडिया हैज लॉन्च्ड सेवरल सैटेलाइट्स व्हिच सेंड साउंड्स एंड इमेजेस टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ विदाउट वायर्स और केबल्स. इंडिया ने बहुत सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है जो क्या करते हैं, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में किसी भी प्लेस पर साउंड्स को या पिक्चर्स को सेंड कर सकते हैं विदाउट वायर्स और केबल्स. इसमें किसी वायर्स और केबल्स की जरूरत
What is a mass communication? When an information or idea is communicated to many people at the same time, it is known as mass communication. And what are the technologies used for mass communication? Newspapers and magazines, radio, television, internet and satellites. Newspapers and magazines give us news and information from all over the world. Now next is radio. Radio gives us information on many interesting subjects. Now next is television. Television helps to inform about happenings around the world. Now next is internet. The internet helps us to connect to people all over the world. Now next is satellites. The communication satellites send radio and television signals around the world. Okay. I hope students you understood the topic mass communication and technologies used for mass communication. That's all for today's class. Thank you.